हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। ओके, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड मोनेरा के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली थी। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। सी द किंगडम मोनेरा the kingdom Monera is divided into two, Archaebacteria and the Eubacteria. Divided into two, the Archaebacteria and the Eubacteria. Okay, so the Archaebacteria are the special group of prokaryote. Why they are known as a special group? Because see, the Archaebacteria are known as a special group because they can survive in the adverse condition where the normal species of the bacteria cannot survive. Okay, that are considered some of the oldest living organism on the earth. ठीक है, apart from that they are also considered as the oldest living organism on the earth. Okay, they are distinguished by their ability to survive in the most hostile environment. Okay, as we have discussed that they can survive in the most adverse condition. Okay, where most of the other life form would perish. Okay, perish मतलब होता है ख़त्म हो जाए. ठीक. Okay, let's study about the certain features about the Archaebacteria which make them unique. So what are these? First of all, अगर वो survive कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में जहाँ पर दूसरी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात होगी द सेल वॉल स्ट्रक्चर. जो उनकी सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होगा वही मेन रीज़न होगा. ठीक है, और वो काफ़ी डिफरेंट होगा. अनलाइक यूबैक्टीरियाज विच आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, दे लैक सेल पेप्टिडोग्लाइकेन. सी, unlike eubacteria which are also known as the true bacteria, their cell wall lack पेप्टिडोग्लाइकेन. ठीक है, जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो लैक करती है पेप्टिडोग्लाइकेन. हमने पढ़ा था जो भी किंगडम मोनेरा में आते हैं दे हैव द सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, बट जो आर्कीबैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की कंपोज नहीं होती है. ओके, इंस्टेड इट is made up of a complex polysaccharide and protein. Instead of peptidoglycan, the cell wall is composed of polysaccharide, complex polysaccharide and the protein. ठीक है, which is sometimes called pseudomurine. ओके, तो एक तो है सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ठीक, जो यूनिक है आर्कीबैक्टीरिया में. देन द सेल मेम्ब्रेन. सी, द सेल मेम्ब्रेन कंटेन ब्रांच्ड चेन लिपिड्स विद ईथर लिंकेज. ठीक है, जो लिपिड होता है ना, जो ब्रांच्ड चेन लिपिड होती है, ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो लिपिड प्रोटीन की ही तो बनी होती है. तो जो उसमें जो लिपिड होती है जो लिपिड होती है उसमें क्या होता है, ईथर लिंकेज होता है. जर्नली सब में ईस्टर लिंकेज फाउंड होता है. ठीक, तो एक ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हमें समझ में आई. ठीक है, सो ब्रांच चेन लिपिड विद ईथर लिंकेज इंस्टेड ऑफ ईस्टर लिंकेज, जो कि यूबैक्टीरिया में हमें जनरली मिलता है. ठीक, सो दिस केमिकल स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड हाई एसिडिटी. ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये क्या है, हाईली स्टेबल है. ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है आर्कीबैक्टीरियाज को फ्रॉम एक्सट्रीम हीट या फिर हाई एसिडिटी से. अपार्ट फ्रॉम दैट जेनेटिक मेकअप, सी देयर DNA कंटेन इंट्रॉन्स. ठीक है, व्हाट आर इंट्रॉन्स? सी, इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. ठीक, एंड देयर प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म इज मोर सिमिलर टू यूकैरियोट्स देन द यूबैक्टीरिया. ओके, सो एक तो ये है डिफरेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, और एक ये 3 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है, अभी इंट्रॉन शायद समझ में नहीं आया, बट आप अभी इसको सिर्फ एज अ चीज़ ये समझो कि जो इंट्रॉन होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन होता है. ठीक है, 2 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन. सो ये होता है इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन और एक्सॉन होता है कोडिंग रीजन.
ठीक है, ये जीन में बात करी गई है। ये जो जीन्स होते हैं उनमें दो रीजन होते हैं, कोडिंग रीजन एंड नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मेजर ग्रुप ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया। सी बेस्ड ऑन देयर हैबिटाट, ठीक है, द प्लेस देयर दे लिव, they are classified into three main type. Methanogens. What are methanogens? See, these are also known as marsh dwellers. See, what is the habitat? Marshy area and the gut of ruminant animals. ठीक है, जो भी marshy area होगा and the gut of ruminant animal like cows, buffaloes and goat. ठीक है, वहाँ पे आप हमें क्या मिलेंगे? Methanogens. Okay, and what is their function? These are obligate anaerobes. They are obligate anaerobes. See, दो टर्म होते, obligate और एक होता है facultative. Facultative. See, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेट है, मीनिंग वो उसको सर्वाइव करने के लिए अपनी कंडीशंस ज़रूरी हैं, विदाउट दैट पर्टिकुलर कंडीशन दे कांट सर्वाइव. बट जो फैकल्टेटिव हैं, मीनिंग दे कैन सर्वाइव इन दी एब्सेंस ऑल्सो. ठीक, वो स्विच कर सकते हैं. ठीक, बट जो ऑब्लिगेट है उनको पर्टिकुलरली वही कंडीशन चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, तो जो मिथेनोजेंस है वो ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं. ठीक है, अगर फैकल्टेटिव लिखा होता तो क्या होता, वो इस कंडीशन में एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं और एरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, सो द ऑब्लिगेट एनारोब्स मीन्स दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. Okay, or they cannot survive in the absence of oxygen. So they convert the carbon dioxide or the formic acid into methane gas. Okay, they are responsible for the conversion of carbon dioxide or the formic acid into the methane gas, also known as biogas. ठीक है, what is their significance? See, they are responsible for the production of methane, ठीक है, from dung of these animal in biogas plant. These bacteria are only responsible for the production of methane, or you can say that the biogas from the dung of the animals. ठीक है, in biogas plant. ठीक है, बायोगैस प्लांट में कौन से बैक्टीरियाज का यूज होता है? मिथेनोजेंस का. पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अनदर टाइप्स आर हेलोफाइल्स. एज द नेम सजेस्ट, द हेलोफाइल्स they can survive in salty area. Okay, see, so what is the habitat? Extremely salty areas like Great Salt Lake or the Dead Sea. ठीक है, these bacteria can survive in salty areas. And what is the mechanism? See, they possess a special purple membrane containing rhodopsin. Okay, they have the special purple membrane containing bacteriorhodopsin. Okay, important, which allow them to capture solar energy. Okay, with the help of bacteriorhodopsin, they are able to capture the solar energy directly to synthesize ATP. Okay, they do not perform the traditional process which is photosynthesis. Okay, without photosynthesis, they are able to synthesize the ATP. Okay, with the help of bacteriorhodopsin. Now the thermoacidophiles. The thermo meaning heat, acido meaning acidic condition. Okay, meaning heat and acid lover bacteria. See, they are found in the hot sulfur springs. Okay, and deep sea hydrothermal vents. Okay, they can survive in temperature as high as 80 degrees Celsius to 100 degrees Celsius and in extremely low pH. ठीक है, highly acidic condition about pH 2, and under aerobic condition they oxidize the sulfur to sulfuric acid for their energy. Okay, so this was all about the types of Archaebacteria. Which we have studied. The first are methanogens, then halophiles, then thermoacidophiles. Now discuss about eubacteria. See, the eubacteria are also known as the true bacteria, and they are the major group of prokaryotic or microorganism. Okay, and they are characterized by the presence of rigid cell wall. Okay, they have rigid cell wall. The
the eubacteria have rigid cell wall and they are motile. If they are motile, there would be a presence of flagella. Okay, and they are represented by the largest and the most diverse group within the kingdom Monera. Okay, within the kingdom Monera, the eubacteria are the largest and the most diverse group. Okay, and now understand about the structure of the eubacteria. See, the eubacteria is composed of cell wall. They have cell membrane, they have capsule, they have nucleoid, plasmid. Okay, and surface appendages are flagella and pili and fimbriae. So first of all, let's understand about cell wall. See, it is composed of peptidoglycan as we have studied earlier, and peptidoglycan is the polymer of sugar and amino acids. What is the role of cell wall? It provides the structural support, protection, rigidity, along with the shape of the maintaining the shape of the bacterial cell. Okay, then cell membrane. Within the cell wall, the cell membrane is present. See, it is typically phospholipid bilayer. As we have studied, the cell membrane is composed of phospholipid and it is bilayer which lie beneath the cell wall. ठीक है, ये cell wall के अंदर present होती है. Okay, then study about the capsule. See, some bacteria, not we are talking about all bacteria, these some bacteria have outer gummy. ठीक है, outer gummy और slimy layer. ठीक है, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके पास जो उनका जो आउटर सरफेस होता है, वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनका जो आउटर सरफेस होता है वहाँ पर आउटर गमी या फिर स्लाइमी लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड कैप्सूल. ठीक है, और उसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन में और अटैचमेंट में हेल्प करती है. ठीक है, जो ये कैप्सूल होती है ये किस में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में और अटैचमेंट में. ठीक, और इट कैन बी आउटर गमी और स्लाइमी लेयर. Now understand about what is nucleoid. See, since they are prokaryote, as we know, the Monera kingdom include all the bacteria and these are prokaryotes. Okay, meaning they lack true membrane bound organelles and instead of nucleus they have nucleoid. Okay, so it has been written that since they are prokaryotes, their genetic material is not enclosed in a nucleus. Okay, their genetic material is not enclosed in nucleus. It is a single circular DNA molecule found in the cytoplasma, which is known as nucleoid. Next, what is plasmid? See, it is extra chromosomal circular DNA. मतलब जो बैक्टीरियल सेल है ना उसमें देखो न्यूक्लियोइड तो होगा, न्यूक्लियोइड तो कंपलसरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो हैव अ प्लाज्मिड. इमेजिन जैसे ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर जो है वो प्लाज्मिड होता है और यहाँ पे जो होगा ये जो है ये रेंडमली ये आपका न्यूक्लियोइड है. ठीक है, तो ईच बैक्टीरियल सेल हैज न्यूक्लियोइड एंड दी प्लाज्मिड. ओके, नाउ व्हाट इज प्लाज्मिड? सी, chromosomal circular DNA molecule, okay, that often carry genes for antibiotic resistance. सी, हमें पता है जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिसीज़ कॉज करते हैं. ठीक है, और वो जो हम जब भी हमें कोई डिसीज़ होती है या बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं. ठीक है, बट कभी कभार कैसा होता है कि हम एंटीबायोटिक कंज्यूम तो कर रहे हैं, ठीक है, बट क्या हो रहा है, हम क्योर नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ द रीज़न. सी, दिस इज़ ओनली द रीज़न. द प्लाज्मिड विच कैरी द जीन्स, द प्लाज्मिड कैरी द जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. क्या हम वो जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या हो गया है, रेजिस्टेंट हो गया है. ठीक है, उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के, इसलिए जो हम पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ले रहे हैं उससे हमारी जो भी बैक्टीरियल डिसीज़ है वो क्योर नहीं हो पा रही है. ठीक, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सरफेस अपेंडेजेस. सी, इमेजिन ये है, ये क्या है आपका बैक्टीरियल सेल, तो इसके सरफेस पे जो अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, ठीक, तो उनके बारे में पढ़ते हैं. तो एक तो हमने पढ़ लिया फ्लैजुला, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरफेस अपेंडेज विच हेल्प इट इन लोकोमोशन. ये होता है आपका फ्लैजुला. ठीक है, ये आपका ऐसे करके फ्लैजुला. ठीक है, जैसे ये आपका बैक्टीरियल सेल है. ठीक, तो जैसे हमने माना ये
ठीक है। ये अब ना फ्लैजिला के बेसिस पे भी हम बैक्टीरिया को बहुत टाइप में डिवाइड कर देते हैं, ये हम हमारी आगे स्टडीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है। सो फ्लैजिला, व्हाट इज फ्लैजिला? इट इज़ अ लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर फॉर मूवमेंट। जो फ्लैजिला होता है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मूवमेंट, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ओके और ये लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू पिलाई एंड फिम्ब्रिए। पिलाई हमने क्या पढ़ा था? सेक्स पाइलस, याद है? कॉन्जुगेशन में सेक्स पाइलस के थ्रू ही तो जो जेनेटिक मटेरियल था वो ट्रांसफर हो रहा था। ठीक। लेट्स स्टडी अबाउट पिलाई एंड फिम्ब्रिए। सी दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर and they are used for attachment and transfer of the genetic material during conjugation। जो यहाँ पर वही लिखा है जो भी हमने पढ़ा कि ये क्या करते हैं, जैसे इमेजिन ये सरफेस है कोई, ये हमारा बैक्टीरियल सेल है, तो जो ये फिम्ब्रिए होते हैं ना, ये ऐसे स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यू कैन से दैट, और स्मॉल हेयर लाइक अपेंडेजेस जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये समथिंग लाइक दैट होते हैं। इससे क्या होता है ना, जो हमारा जो भी बैक्टीरिया, ये हमारा होता है फ्लैजिला। ओके द फ्लैजिला होता है वो लॉन्गर होता है देन, तो इससे क्या, ये किस में हेल्प कर रहे हैं, हमारे अटैचमेंट में, अटैचमेंट टू द सरफेस। ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ यूबैक्टीरिया। नाउ लेट्स understood the classification on the basis of the nutrition. See, eubacteria show incredible metabolic diversity. How? They can be autotrophic bacteria or they can be heterotrophic bacteria. See, if we are saying they are autotrophic, meaning they can synthesize their own food. They could be photosynthetic autotrophs or they could be chemosynthetic autotrophs. Okay. See, what are phototrophic? Phototrophic meaning they uses the light energy. Okay. And the example is cyanobacteria, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साइनोबैक्टीरिया, इससे क्वेश्चन आना तो कंपलसरी ही है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उसका ये जो स्ट्रक्चर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक। ओके नाउ लेट्स स्टडी अबाउट साइनोबैक्टीरिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके द साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी and it have a chlorophyll A. That's why it is able to photosynthesize the food which is similar to the plants and perform the oxygenic photosynthesis. Okay, it has chlorophyll A which is similar to the green plants and it is able to perform oxygenic photosynthesis. Oxygenic meaning in the presence of O2. Okay, and what is their structure? They are unicellular, colonial or filamentous. See, this is filamentous structure na. Okay, unicellular. See, unicellular. Okay, and one of the most important thing about cyanobacteria, the heterocyst. These are the specialized cells. Okay, the heterocyst which are present between the vegetative cell of the cyanobacteria. These are the specialized cell. Okay, and these are found in nostoc and anabina. And the function of the heterocyst is to fix the atmospheric nitrogen. Okay, that's why they are also used as a biofertilizer. Okay, they are also used as a biofertilizer. ठीक, due to the presence of heterocyst. Okay, let's study about its structure. देखो ये जो भी है ये है vegetative cell. Okay, these all are vegetative cells. ठीक, and this is heterocyst. This specialized cell is heterocyst, and the entire filamentous structure of the nostoc has been covered by a mucilaginous sheet. Okay, this is filamentous blue green alga nostoc. Okay, now study about the chemosynthetic autotrophs. How they synthesize their own food? See, they oxidize inorganic substances like nitrate, nitrite or ammonia to get energy. Okay, they are using the chlorophyll A and they perform the photosynthesis in the presence of oxygenic condition while they oxidize the inorganic substances which are like nitrate, nitrites or ammonia or any other kind of inorganic substances to get energy. Okay, for ATP production. One of the crucial role is that, see, they recycle the nutrient. Okay, with the help of chemosynthetic autotroph bacteria,
the nutrient get recycled like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Okay, this was all about the autotrophic bacteria. Okay, now to study about the heterotrophic bacteria. See, these are most abundant. Although autotrophic bacteria are useful, but the heterotrophic bacteria are more abundant as compared to the autotrophic bacteria. Okay, as the term heterotroph mean, they are not able to synthesize their own food. They are dependent on other microorganisms for their food. Okay, let's study. See, these are the most abundant in nature and act primarily as a decomposer. What are decomposer? Microorganism which break down or feed upon dead and decay matter. Okay, these are decomposer. So they primarily the heterotrophic bacteria primarily act as a decomposer. Okay, and how they are useful? See, making curd from milk. ठीक है, जब हम जो कर्ड बनाते हैं मिल्क से, वो किसके हेल्प से बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. ओके, जो कर्ड होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस. लैक्टो रिलेटेड टू लैक्टोज शुगर किस में होती है? मिल्क में होती है ना. तो हम इसका नाम ऐसे याद रख सकते हैं, सो लैक्टोबैसिलस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं. ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द लेग्यूम रूट्स. ओके, जो लेग्यूम होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं ना, उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके, एंड व्हाट आर द हार्मफुल रोल्स? Okay, this was all about the beneficial part of the heterotrophic bacteria, and now what are the harmful roles of the heterotrophic bacteria? See, they causes many diseases like chlorella, typhoid, tetanus and citrus canker in plant. Okay, these are the harmful role of heterotrophic bacteria. They act as a pathogen for the diseases like chlorella, typhoid, tetanus and citrus canker. Now we'll study about the reproduction. See, what are the mode of reproduction in bacteria? First of all, binary fission as we have discussed earlier. ठीक है, this is the most common method. और ये जो होता है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, पॉइंट टू बी रिमेंबर. और जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है ये जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है? थिक वॉल्ड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कोप अप करते हैं या सर्वाइव करते हैं जो भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसको. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये क्या करते हैं? न्यू स्पीशीज़ को फॉर्म करते हैं. अगर हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करें, एक प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी कैन से दैट. ओके, तो ये किस मेथड से होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन. दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्ली वीडियो. सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस अबाउट दिस मेथड यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, पर्टिकुलर दैट वीडियो. ओके, क्योंकि हमने उन वीडियो में इन सब मेथड के बारे में बहुत डीपली स्टडी किया है. ठीक है, तो आपको जो भी देखना है वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा. ओके, नाउ वील स्टडी अबाउट द माइकोप्लाज्मा. ठीक है, माइकोप्लाज्मा के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, बट ओके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसके बारे में लिख दिया है. सी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन. स्मॉलेस्ट लिविंग सेल टू बी नोन. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट, इसमें जो ये तीनों पॉइंट है ना, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा के लिए. ठीक, कंप्लीटली लैक करता है सेल वॉल. ओके, और ये कैन सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन. इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड इट इज़ पैथोजेनिक इन नेचर. यही 4 पॉइंट है माइकोप्लाज्मा के बारे में जो हमें एनसीईआरटी में बताए गए हैं, और ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए. तो आप ये चारों पॉइंट इसमें ये और ये समझ लीजिएगा. ओके ला. ओके, नाउ वील स्टडी अबाउट द डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. व्हाट आर द डिसीज? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमंस में कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं बैक्टीरिया के. ठीक है, ऑल्दो दे आर वेरी यूजफुल लाइक साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, these all are useful form of bacteria, but apart from that there are many harmful
multiple bacteria. Okay, they caused. Okay, now human bacterial disease. See, this is caused by pathogenic bacteria, the bacteria which are pathogenic in nature and that enters the body through contaminated food, water or air. Okay. Okay, now study about the different disease which has been caused by the bacteria. See, like typhoid. It is caused by Salmonella typhi. And what are the symptoms of these? The high fever, stomach pain, weakness. Okay, these are the key symptoms. What are the key symptoms? See, high fever, stomach pain and weakness. And it has been diagnosed by a test known as Vidal test. Point to be remembered. Okay, the typhoid is diagnosed by a test which is known as Vidal test. Second is the pneumonia. What is the pathogen? Streptococcus pneumoniae or Haemophilus influenzae. These are the two bacteria. Remember, please remember their name. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Okay, the pneumonia is caused by these two species of the bacteria. What is the key symptom of this disease? See, the alveoli. We have discussed in the respiration chapter about the alveoli which are present in the lungs. So the alveoli get filled with the fluid. ठीक है, which result in difficulty during the breathing. Okay, this is one of the symptom. Another is fever, chill. Okay. Now another disease, chlorella, which has been caused by the bacterial species known as Vibrio chlorelli. Okay, and what is the symptom? See, it causes a severe diarrhea and dehydration in the body, and it spread through the contaminated water. ठीक है, the chlorella is spread by contaminated water. Another disease, tetanus. Okay, it is caused by Clostridium tetani. The bacterial species Clostridium tetani causes the tetanus. Okay, it is also known as lockjaw. Okay, why? Due to the painful muscle spasms. Okay, so this was all about the human disease which are caused by the bacteria. Now, what are the plant disease which are caused by the bacterial species? One of the most important is citrus canker. Okay, as the name suggests, citrus canker, meaning जो भी citrus trees होंगी, like what are citrus trees? Any idea? Citrus, lemon, orange, these all are citrus tree. Okay, so this citrus canker occur on a citrus tree and it has been caused by the bacterial species known as Xanthomonas citrae, most important. Okay, it produces lesions on leaf. ठीक है, जैसे ये leaves है citrus, sorry, जैसे ये leaf है तो क्या होगा, ये होगा ऐसे ऐसे और यहाँ डॉट 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 समथिंग इस टाइप के लेशंस प्रेजेंट अपीयर होंगे लीफ के सरफेस पे. ठीक है, थोड़े से रेडिश ब्राउनिश कलर के. ठीक है, जो भी सिट्रस ट्री होगा उसके सरफेस पे. ठीक है, जैसे ये आपका लीफ है, इसकी मिड ड्रिप ऐसे सरफेस पे ये अपीयर होंगे. ठीक, लीव्स पे हो सकते हैं, स्टेम पे हो सकते हैं एंड इवन फ्रूट पे भी हो सकते हैं. ठीक, अनदर इज क्राउन गैल. ठीक, सी इट इज caused by Agrobacterium tumefaciens, most important, this also. Okay, this was the two bacterial disease. So we have discussed about in this video about Archaebacteria, completely about the Archaebacteria. Okay, and let's study and the Eubacteria and the Eubacteria. Okay, the reproduction in bacteria, how does take place. Okay, about mycoplasma we have studied. Okay, and the disease caused by the bacterial species. Okay, so if you want the notes, then you have to join the Telegram channel. Okay, and thank you for watching and please subscribe the channel.